Hello. Welcome to my YouTube channel. I am Anant Vinayak, and today I have taken the second part of your Computer Science Chapter 1. Let's get started. So, first we'll do the quick recap what we have studied in the previous video. So wait. These are things that we have studied last class. Computer science, then tokens in Python, smallest individual unit, छोटा सा यूनिट होता है प्रोग्राम का, उसको टोकन बोलते हैं. पाइथन में 5 टोकन हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटर्स एंड पंक्चुएटर्स. कीवर्ड्स हम लोग डिस्कस किए हैं. एक सेकेंड. या keywords are predefined words with special meaning to the language. कंपाइलर इंटरप्रेटर अब मैंने डिस्कस किया है कि दो ट्रांसलेटर्स होते हैं. बेसिक कीवर्ड्स ये सब. आइडेंटिफायर्स हमने पढ़ा. आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. फिर हमने देखा रूल्स. वेट. ओके, सॉरी. ओके, तो ये हमने देखा पेज के व्यू previous page. Yeah, fine. So आज हम लोग देखेंगे literals. Okay, here we go. Literals. What are literals? So literals are nothing. Wait, literals are just data. Literals are data. Literals are data items that have a fixed or constant value. लिटर्स क्या होते हैं? लिटर्स डेटा आइटम्स होते हैं जिनके पास कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू होते हैं. फाइन, ये हमने जान लिया. तो अब क्या जानना है? कुछ टाइप्स पढ़ने हैं इसके. ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा. टाइप्स ऑफ literals. First type, string literals. स्ट्रिंग जैसे नाम से पता चल रहा है. स्ट्रिंग मतलब
ऐसा कोई लिटरल्स जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो। चलिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन में लिख ले। ओके, कुछ डिफरेंटली। ओके, अ स्ट्रिंग literal is a sequence of characters surrounded by quotes so there are several quotes, सिंगल कोट, डबल कोट, दो कोट होते हैं। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स क्या है? It must terminate in one line। भाई नाम ही इसका सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, मतलब एक लाइन में ख़त्म होने वाले स्ट्रिंग्स। ठीक, अब फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है। द क्लोजिंग quotes should be on the same line Second, multi-line string, multi-line strings। इसमें भी नेम से पता चल रहा है कि मल्टी लाइन है, मतलब कि ये एक लाइन में ख़त्म नहीं होगा, ये मल्टीपल लाइंस में ही ख़त्म होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स are strings that spread across multiple lines ओके, फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, इसके कोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सिंगल कोड से भी हो जाएगा और मल्टीपल कोड से भी। इन दिस we can use single quote like the one displaying on this one, like this, or double quotes like this. We have discussed this so far, then we'll discuss more about it. Then there are a table given in your Python book, so I will not discuss that one now because right now I am not having the image. Okay, second type we'll discuss. Wait, second is numeric
लेटर्स, न्यूमेरिक लेटर्स। व्हाट आर न्यूमेरिक लेटर्स? न्यूमेरिक लेटर्स से मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू या फिर नंबर स्टोर करेंगे। क्लियर है? वॉइस अगर क्लियर नहीं आएगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो माइक यूज़ किया हुआ है, अब पता नहीं आप लोग कैसा वॉइस जा रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कुछ इशू आएगा तो बताइएगा ज़रूर। न्यूमेरिक लेटर्स, न्यूमेरिक लेटर्स डिफाइन कर लीजिए। न्यूमेरिक, क्या हो रहा है कलर का, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कलर, बदल दो ये कलर। न्यूमेरिक लेटर्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज and these can be and these can be one of the following. Following. इसके टाइप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे टाइप्स पर है रखे, जैसे यहाँ पे आप टाइप्स पर होंगे ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, उसी तरह हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है। वेट, इसके टाइप्स तो हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक लेटर्स। फर्स्ट टाइप डेसिमल फॉर्म, आपकी बुक में दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऐसे न्यूमेरिक लेटर्स हैं जिनमें डेसिमल का यूज़ हुआ होगा। आपको लगता है ना डेसिमल का यूज़ हुआ होगा इसमें? हाँ, तो चलिए इसको प्रॉपर डिफाइन कर लें। तो आपकी बुक में जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है वही हम आपको लिखवा देते हैं, बेटर रहेगा, या उन लोगों के पास बुक नहीं है, और फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, जिससे कि आपको जब पढ़िएगा आप चैप्टर तो आपको अपने आप समझ में आ जाए कि मैंने क्या बताया। सो इट इज़ an integer, it is an integer, wait, it is an integer। अच्छा, जिन्हें पता नहीं है कि आपका बुक कौन सा, आपका बुक ये है, देख लीजिए, क्योंकि हम भी देख ले कि आपको कैसा दिख रहा है। देखिए, देखिए, तो ये है आपका बुक, समिता अरोरा कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो परचेज कर ले। सो डेसिमल फॉर्म डिस्कस करते हैं, इट इज एन इंटीजर ऑफन कॉल्ड, और बिगिनिंग विथ डेसिमल एग्जाम्पल एक्चुअली डेसिमल फॉर्म जो आपका है वो नहीं है, मैंने पॉइंट वाला नहीं है, ये आपका सिंपल हुआ, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया। फाइन। सेकंड टाइप ऑक्टल
octal form. Octal form. So it is an integer. It is an integer beginning with beginning with 0 O. See, इसमें आपको बताया गया, एक सेकेंड, ये इसको ध्यान रखना, इसका फॉर्म है 0 फॉलोड बाय लेटर O. एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइम हम लोग एग्जाम्पल करेंगे. जैसे कि आप ले सकते हैं 0. नेक्स्ट आपको लेना होगा कुछ भी, जैसे कि 0O34, 0O12, 0O67, etc.